compelling circumstances, the Honorable Home Minister of India, Shri Rajnath Singh, is unable to attend the Huddle 2019. We will therefore be moving into the final session without a tea break. We request you to please remain seated. We decided to end the third edition of the Huddle literally on a magical note. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming on stage Mr. John Zubrzycki, author, and Mr. Shamshuddin, street magician, to present Making Jadoo, a journey through the street magic of India. Good evening. Thank you very much. Can we start the first slide? Yes, thank you very much. It's a pleasure to be here. In my earlier days when I was a diplomat in Delhi, I was actually the press attaché, and in the early 90s, I made it one of my first ports of call was the Hindu's office in Madras, as it was then known, to meet N. Ram and some of the other, who was then editor-in-chief of the newspaper, and it's quite extraordinary that I'm here nearly 28 years later about to present a magic show. So I hope you enjoy the evening. What's going to happen today is I'm going to give a brief introduction to Indian street magic, and then I'm going to hand it over to Shamshuddin here, who is going to perform a set of traditional Indian street magic routines for everybody's enjoyment. I'd even urge you to come closer because normally Shamshuddin would be performing out in the open encircled by people. Now, there might be a bit of blood and gore later in the show, but I can assure you that you will all be safe. What I've set out to do in my book, Jadoowalas, Jugglers and Jinns, is to remind people of the richness and importance of Indian magic. I describe the book as a cultural, social, and even political history of India's conjuring traditions, and then trace their descent from the realm of the gods to the domain of daily ritual and popular entertainment. I also set out to plot the evolution of magic from the street to the stage, culminating with the rise of legendary performers such as Gogia Pasha and P.C. Sorkar Sr., and the impact performers such as these had on Western magic and popular culture. India's association with magic goes back thousands of years. I found references to magic in Kautilya's Arthashastra, where he urged the use of sleight-of-hand artists as spies, and in the memoirs of the Mughal Emperor Jahangir, whose obsession with India's wonder workers interfered with the day-to-day running of the state to such an extent that a group of complainants wishing to report abuses of power by the governor of Bengal had to dress up as magicians to get his attention. Hindu and Muslim nobles employed illusionists, mountebanks, jesters, buffoons, and clowns to entertain their guests. Over the centuries, they would be celebrated and censured. These mostly itinerant showpeople occupied the lowest rungs of the caste hierarchy, yet they were indispensable. They were patronized for their prowess in performing exorcisms and divinations, countering the effects of inauspicious omens, dispensing life-prolonging elixirs and love charms, as well as entertaining the ministers of the court, the women of the harem, and ambassadors from distant lands. They were an integral feature of festivals, religious rituals, and secular ceremonies, their skills codified in the sacred lists of the 64 essential arts. Travelers and chroniclers would leave descriptions of extraordinary feats of magic staged in dusty village squares and the cool marble courtyards of palaces and havelis. And in the early 19th century,
touring magicians mesmerized audiences abroad, prompting generations of Western illusionists to emulate their Eastern peers. What you are about to witness today is a series of tricks that have been performed by traditional Indian street magicians for generations. The methods for their execution passed down from father to son with a minimum of change. India's pantheon of magicians, Jadoowalas, Tamashawalas, Jadoogars, Madaris, Mayakaris, Muslets, Kalandars, Sampwalas, Peepshowwalas, the list goes on, ranged across creed and caste. Stronger than religious ties is their association with the Bare Pal, the Brotherhood of 12, an ancient collective of strolling players that includes jugglers, snake charmers, animal handlers, puppeteers, ventriloquists, storytellers, impersonators, and acrobats. Regardless of their backgrounds, members of this peripatetic brotherhood could share a cooking hearth made out of 3 stones whenever their wanderings brought them together. Shamshuddin, who will be performing today, is a street magician from Palakkad district in Kerala. He is the 5th generation of his family to take up magic as a profession. And his son Mustafa, who will be accompanying him, who's sitting here on my left, is teaching his children to carry on the tradition, making 7 generations in all. Shamshuddin has been a performer for almost 50 years. He has travelled throughout India and the Gulf and is the recipient of numerous awards, including the Kerala Sangeet Natak Academy Award in 2014. Today he'll be performing 3 classics of the street magician's repertoire, and I'm going to be explaining their provenance and significance, and what a provenance they have. References to the mango tree trick, the main feat he'll be performing, go back to the 6th century BCE. But first, let me briefly share some thoughts with you on the psychology of magic, because although the tricks you're about to see are quintessentially Indian, there is much that is universal about the magician's craft. In my book, I came up with a simple yet all-encompassing definition for magic as the artful performance of impossible effects. No matter what the means used to execute the trick, the ends are the same, because what real magic should do is to upend that straight-jacketed rationalist in you and that inbuilt self-defense mechanism that creates the well-defined boundaries that you use to navigate the day-to-day. In the end, the fundamentals of magic are pretty simple. There are what are called in the trade happenings, such as the inexplicable appearance of a ball under a cup that wasn't there before. Then there are spectacles, such as levitation acts and the legendary rope trick. Transitions where something or somebody is passed mysteriously from one place to another. And finally, those tricks which are strictly impossible, such as taking a deck of cards and transforming the Queen of Diamonds into a 3 of spade. And all 4 categories can be found in the repertoire of traditional Indian street performers, through to the performances of the world's most famous illusionists such as David Copperfield, David Blaine, Penn and Teller, and so on. And today, here in Bangalore, you'll be seeing all 4 types of illusions at play. One more thing before we begin the fun part of the evening. Not only is my book a social, cultural, political, even economic history of Indian magic, it is also a story of East meets West and East versus West. Let me explain why using just a couple of examples. Indian magic was widely derided during the 19th and early 20th centuries by European magicians who were determined to prove that they were masters of the craft. In something akin to a colonial land grab, the Jadoowalas' secrets were exposed, copied, and stolen.
But no matter how hard these Western conjurers tried, they could not dent the public's fascination with India's wonder workers, those soothsayers of the East whose feats of legerdemain and physical dexterity created a sensation. Within a few decades of the arrival of the first Indian jugglers in England in 1813, continental conjurers were blackening their faces, donning turbans and silken robes, and adopting oxymoronic names such as the Fakir of Shiva, the Fakir of Simla, the Fakir of Ava, the Fakir of Ulu, and even the Fakir of Jaipur. Meanwhile, thousands of magicians, acrobats, and dancers from the subcontinent were recruited to the great world fairs of the 19th and early 20th centuries. And one of those during the recruiting, believe it or not, was India's very own P.T. Barnum, Motilal Nehru, who, recognizing there was more money to be made from being an entertainment impresario than an Allahabad barrister, formed a company to send a troupe of jugglers to the Paris Exposition of 1900. Sorry, I'm pressing the wrong one. 50 million people, a figure that wouldn't be surpassed until the Montreal Expo in 1967, went through the turnstiles in Paris, most of them making a beeline for Motilal Nehru's snake charmers and sleight of hand artists. Motilal's tryst with show business almost never happened. Officials in Bombay had at first refused permission for the troupe to sail to Europe because the emigration of Indian labourers was strictly controlled. In what was probably the most unusual case ever to come across a viceroy's desk, Lord Curzon had to rule whether a Jadoowalla's tricks constituted manual labour because they were executed by sleight of hand. Fortunately, sense prevailed, and Indian magicians were recognized for what they were, entertainers of the highest order. Shamshuddin falls squarely into that category, and there's nothing laborious in what he's going to show you. What you are about to see is a fragment of a traditional Indian street magician's repertoire, a sight that these days is very rarely seen in India's largest cities and towns. Unlike Western stage magicians who rely on mirrors, trapdoors, hidden wires, and so on, Shamshuddin will be performing without any props. And if this were a dusty village square rather than the ITC Gardenia, he would be encircled by people. It's probably just as well that you're at a safe distance because there's going to be a lot of blood. And if there's one thing that the Indian street magician excels in, it's gore. Decapitation and dismemberment, which we'll be seeing today, cutting out tongues and stabbing assistants with swords are all integral to the Jadoowalla's repertoire. After the Sepoy Rebellion of 1857, perhaps the goriest of all, the Indian basket trick became part of the repertoire of dozens of Western magicians, prompting at least one contemporary historian to speculate that the implicit violence in the act, where a woman or child gets impaled by a sword, was meant to mirror the murder of Britishers during the revolt. As I point out in my book, the most famous exponents of self-mutilation were the Rafai Fakirs of Hyderabad. Their tricks included walking around with knives protruding from their heads, impaling themselves on spears, and removing their eyeballs on the point of a sword. One of the best archival sources on Indian magic just happens to be the Memoirs of Jahangir. As well as loving wine, women, and song, wine, women, and song, the Mughal emperor pointed out, as I pointed out earlier, was a connoisseur of India's conjuring traditions. In his memoir, he describes how a troupe of 7 Bengali jugglers came to his court, boasting of producing effects so strange as to surpass the scope of human understanding. Over the course of what would have been several days and nights, they effected no fewer than 28 tricks,
a compendium of marbles that encompassed many of the legendary feats of Indian magic, all executed with such skill and consisting of such wonders that the loquacious mogul would often be left for words. I open my book with Jahangir's account of the Bengali jugglers and contrast it with an actual performance by a troupe of magicians from Ghaziabad that I witnessed on the outskirts of Delhi. I could trace the provenance of almost all of the tricks they performed to those shown to Jahangir 400 years earlier. The first one was actually a version of the mango tree trick, and we'll get to that shortly. The others included a marvelous bird cage that revealed a different pair of birds each time it revolved, and a book whose pages changed colors and lettering each time it was opened. Another part of Shamshuddin's repertoire today is the fire and regurgitation trick, a version of which Jahangir described as follows. A man opened his mouth to reveal a snake's head. Another of the jugglers pulled the serpent out and in the same manner produced another 7, each of which was several feet in length. These were thrown on the ground where, in the words of the mogul, they were seen writhing in the folds of each other and tearing one another apart with the greatest fury, a spectacle no less strange than frightful. In fact, the provenance for this trick goes back even further than the reign of Jahangir. During the Abbasid Caliphate, the most famous bookseller of Baghdad, Al-Faraj Muhammad al-Nadim, published the Fihrist al-Ulum, or Catalogue of Sciences, an extraordinary volume that listed all the known books that had been translated into Arabic and Persian. Among them were more than a dozen manuals of Indian conjuring, including one by Kutab al-Raha, the author of the rather long-winded title, Swallowing the Sword, the Rod, Pebbles and Shells, and Eating Soap and Glass with a Trick for That. The most famous feat Shamshuddin will be performing today is the Indian mango trick, and he'll be doing this progressively through the show. This is definitely one of the most ancient tricks in the annals of Indian magic. Its secret passed down from generation to generation of magicians for more than 2,500 years. The first reference I could find to it came in the Pali version of the Buddha's saying known as the Dhammapada Commentary. In the text, the Buddha announces that he will meet a group of heretics for a competition of magical powers at the foot of a mango tree. Fearing they would lose such a competition, the heretics chop down all the trees in the area. The king's gardener, Ganda, gives the Buddha an offering of a mango. When he finishes eating it, he gives the seed back to Ganda and asks him to plant it. The Buddha then sprinkles some water and the seed instantly becomes a mango tree, 50 cubits in height, rising from the ground laden with fruit and flowers. Known as Ganda's mango, the tree marks the place where the Buddha rises in the air and performs a miracle where water and flames shoot out simultaneously from different parts of his body. In Jahangir's memoirs, the first of the 28 tricks he has shown begins with the chief juggler promising to produce any tree in an instant, merely by placing a seed in the earth. When one of Jahangir's nobles orders a mulberry tree, the other jugglers get up and in 10 separate spots plant seeds in the ground. After reciting a series of spells, plants instantly spring from each of the 10 places. In front of their bewildered audience, they produce mango, apple, cypress, fig, almond, walnut, and other trees. The fruit is picked and distributed for tasting. The trick of producing a mango tree from nothing became popular with Western magicians in the 18th century onwards, who often used hidden mechanisms to make leaves, then flowers, and then fruit magically sprout from nowhere. In 1893, when Harry Houdini made his professional debut at the World's Columbian Exposition in 1893, he was dressed as a Hindu fakir. One of his tricks was planting a seed into the ground that sprouted into a mango tree.
The founder of the Theosophical Society, Madame Blavatsky, cited feats such as the mango tree trick, aerial suspension, and the legendary rope trick as evidence that India was a land where miracles, a land of miracles and of real magic whose secrets were beyond the understanding of European magicians. The mango tree trick was also the only feat of Indian juggling listed in Hobson-Jobson, the Anglo-Indian glossary published in 1886, where it was described as the most perfect achievement of the conjurer's art. The glossary's authors, Henry Yule and A.C. Bernal, related the story of a traveller of note who witnessed the trick in the Deccan, and I quote, "The narrator, then a young officer, determined with a comrade, no matter what, to solve the mystery. In the middle of the trick, one suddenly seized the conjurer, whilst the other uncovered and snatched at the mango plant. But lo, it came from the earth with a root, and the mystery was darker than ever. The illusion ended with the tree sinking into the ground, leaving nothing but the pot, into which the magician dug and produced the original seed. The secret of how it was achieved remained just that." So, ladies and gentlemen, I'll stop talking now and hand the stage over to the real magician of the evening, Shamshuddin and his son Mustafa. Check. கொடுங்க. Shamshuddin, as John rightly pointed out, is a street magician. He would love it if some of you can join him on stage, surround him from at least a few sides. He's very uncomfortable performing on stage because people think there are trap doors and things. Please, sir, please join. We have asked some of the event guys to stand around him, but Indian street magic is the only form of magic in the world which is always performed below the audience's eyes. They won't come in front, don't worry. And there's a reason this is called the huddle. You're supposed to huddle around. So come on up. எனக்கு മലയാളത്തിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ അറിയും தமிழ் அழகா பேச தெரியும் जो கன்னடா தெரியாது சொல்றது தெரியும் திருப்பி சொல்ல முடியாது हिंदी में थोड़ा थोड़ा बात अच्छा करने के लिए आते मैं इंडिया में सब जाए घुमा हूँ मैं हिंदी में भी बोलता हूँ मलयालम में भी बोलता हूँ तमिल में भी बोलता हूँ समझाए आज अब मैं गाना बजाया तो हमारा देश में हमारा दिल में बहुत रहा है मोहम्मद रफ़ी सार उनका गाना है ये अभी इसके अंदर एक जानवर है जानवर अच्छा उसको मैं इधर छोड़ेगा मेरा पास एक सांप है टोकरा किधर एवड़े पोई पामंडा कोट्टा आ कोट्टे एड़कू जल्दी जल्दी से उठाओ छोड़ देगा सांप ये इसके अंदर इस जानवर ये सांप का पास झगड़ा करेगा फाइट करेगा लड़ाई करेगा ये है बड़ा खराबी सांप है ये काटा तो इंसान नहीं मरेगा जान चले जाएगा अभी तो हम बजाता हूँ सांप आएगा इसके अंदर का जानवर को फाइट करेगा आ जाओ
सांप नहीं आया, ये फ्लूट है, ये फ्लूट बजाया तो सांप नहीं आएगा, ये बजाया तो इंसान इसका गाना सुनेगा। तो ये है सांप बजाने के लिए, ये बजाए तो सांप आ जाएगा। ये पुराना जमाने में सांप को बुलाने का माल है, पुंगी बजाया तो सांप आ जाएगा बोलेगा। और ये जमाने में पुंगी नहीं है, हमारा बेटा को बुलाए तो बेटा नहीं आएगा, जा डैडी बोलेगा हमारा पास, तुम जाओ हम नहीं आएगा। देखो ये सांप को अक्ल नहीं है, वो इसको बुलाए तो आएगा। देखो अभी हम बजाएगा, मंदिर चढ़ गया इसके अंदर, रेडी। बेकार हो गया ना, इसके लिए इसको छोड़ते, आप ये काम करो, पुंगी बजा के दम नहीं आएगा, उसके लिए हम इसको छोड़ते, तुम ये लकड़ी पकड़ के वहां जाके खड़ो। ये जानवर आ गया तो उधर से आ गया तो उधर पकड़ो, इधर उधर है ना आदमी लोग को नहीं आएगा, ये बाजू का गया तो तुम पकड़ो। इसका अंदर का जानवर अभी मैं छोड़ता हूँ, कपड़ा डाल के पकड़ना उसको। ये पहले एक 2 साल का पहले KR बुरम में इसको छोड़ा, ये भाग गया, बहुत तकलीफ आ गया मुझे। KR புரத்தில் வச்சு இது விட்ட சார், இது விட்ட உடனே இது ஓடிடுச்சு, ஓடின உடனே எனக்கு பிடிக்க முடியல, ஒரு ஆள் கீழே விழுந்து டேஞ்சர் ஆயிடுச்சு। अरे बाप रे, आ जाओ, शैतान के बच्चे, बहुत अच्छा आदमी है वो, हमारा दोस्त है, आ जाओ इधर, रेडी। अभी आ जाएगा शैतान की बच्चा, इसके अंदर एक जानवर, अब आ जाओ आ जाओ, आ गया, ओ आ गया, रेडी, ओके ओके ओके, रेडी रेडी। भागना मत करो भैया, ചാടി പോകല്ലേ, ഓടിപ്പോകല്ലേ, എവിടെ ഇരി. ഇതിനെന്തെങ്കിലും കൊടുത്തോ, മലയാളം കൊടുത്തോ, കുറച്ച് അറിയാം മലയാളം. अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, रेडी रेडी, ओके ओके। अभी इसको छोड़ता हूं मैं, सिर पकड़ेगा, आजा, आ गया, इधर रखता हूं भैया, आ गया तो पकड़ के दो। ये टोकरा इधर रख देता हूं, ये खाली टोकरा है, इधर रखता हूं। जादू में बहुत बहुत जादू खेल तुम देखा रहेगा दुनिया में, मैजिक। इतना बाजू, छोटा भी आ जाओ बाजू, थोड़ा बाजू का ही, इतना पर आइए, चलो। ये स्टेज में रहा तो कितना ठकाने का काम चला तो भी वो मालूम नहीं पड़ेगा। इधर भी आदमी नहीं है, इधर भी आदमी नहीं है स्टेज में, जो मेरा पास बाजू खदमी है ना। ये देखो, ये एक 500 रुपया है, ये 500 रुपया जिंदा जान से एक जानवर हो जाएगा, सांप, बड़ा बड़ा सांप हो जाएगा। इसको देखो, आ जाएगा, करेक्ट, ऐसे खड़ो। अभी देखो जान आ जाएगा इसको, आ जाओ शैतान के बच्चे। नहीं आया है, हलता है ना उसको, जान आ गया, जान आ गया। अभी ये टोकरी में कुछ माल नहीं है, खाली टोकरी है, इसे देखा तो बम्बई दिसेगा। ये जानवर आ जाएगा, अभी इसका सिर पकड़ेगा, आओ, अरे अरे भाग जा, अरे पकड़े पकड़े, आ गया आ गया, जाओ रे जल्दी से, जल्दी जाओ, हो गया काम। अभी आपका सामने वार दिखा है, टोकरी खाली है। अभी इसके ऊपर में ये टोकरी मुछेगा, मुछने के लिए ये 500 रुपया, इतना मोटा इतना बड़ा सांप हो जाएगा, राज नागम हो जाएगा। अभी देखो, पहले आपको टोकरी खाली बताया हूं, अभी भी टोकरी में कुछ माल नहीं है, और देख लियो मेरा पास कुछ माल नहीं है, जो सांप नहीं है। अभी आप कोई लोग शक है आपका दिल में, संशयम, संदेहम, खोल क्यों, ये खोल के, ये ना, इसमें नहीं है, इसमें सांप है। देखो जा, कुछ माल भी नहीं है, नहीं देखो कुछ नहीं ना, हाथ उठाना पड़ेगा, हाथ उठा दिया, ये हाथ उठाना पड़ेगा, हाँ ये हाथ उठा दिया। साहब 2 हाथ भी उठाए तो खाना खाने का ना। अभी देखो, इंसान को बहुत शक लग गया तो बहुत खराब है। और इसके अंदर शमशुद्दीन भैया,
अब पहले दिखाया तो खाली टोकरा ऐसा दिखाया, कुछ माल नहीं है, ये इधर से ये इसके अंदर से कुछ माल इसके अंदर छोड़ा है, बाद में टोकरा अंदर हाथ डाल के ऐसा पकड़ा, उसके अंदर जानवर है, वो है सच। देखो कुछ है नहीं, नहीं साहब खाली है, टोकरा खाली है। मैं थोड़ा कॉमेडी बताया तो ऐसा देखते हैं, देखो 500 रुपया, अभी देखो जानवर आ जाएगा, ये कपड़े में कुछ माल नहीं है, इधर जानवर नहीं है, अभी देखो इसके अंदर जानवर आ जाएगा, अभी ये कैसा आएगा हम दिखाएगा, जादूगर दिखाता है। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, शैतान के बच्चे, बहुत मुश्किल नहीं करना, हमारा दोस्त है शैतान का बच्चा, आ जाओ। आ गया, टोकरा रखेगा, ये सा कपड़े के अंदर हाथ डालेगा, आपको शक मारेगा, शमशु भाई तुम क्या क्या काम करते हैं, तो कपड़ा इसके ऊपर से उठा देगा। मैं इधर सांप नहीं है, इधर सांप नहीं है, मेरा इधर भी सांप नहीं है, उधर भी सांप नहीं है, अभी आ जाएगा, आ जाओ। आ गया सांप, आ गया, आ गया, आ जाओ जल्दी से। इसके अंदर मैं 5 रुपये रखा है ना, बड़ा सांप आ गया, तरह के बाबरे बड़े, ये है सांप है, रबर है असली सांप नहीं है, असली सांप रह गया तो फॉरेस्ट पकड़ देगा, उसके लिए नकली सांप है। सुनो भैया, ये सांप मैं इधर रख के तुम्हारा पास झूठ बोल दिया है, ये 5 रुपया को जान देने के लिए रहा, तो ये लोग, ये दुनिया में कोई इंसान नहीं मरेगा, उसको सुबह में जान दे देगा है? अभी ये सब नहीं है मैजिक, मैजिक जिंदगी में आप देखते हैं ना, मैजिक अभी दिखाता है जादूगर। देखो तुम्हारा सामने बार, ये मेरा पास एक मट्टी का ये लवा है, ये फूल रखने का ये है ना, इसको मलयालम में बोलते हैं पुचट्टी, तमिल मन चट्टी, क्या बोलते हैं इसको मलयालम तमिल मन चट्टी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, फूल का छड़ी, कोई माल रहा है सब। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ने आता है। अभी देखो ये, अभी इसके अंदर पानी डालता हूँ, ये आम का बीज है, मैं दिया हूँ ये सांप का पास, सर ये आम का बीज है ना, आम का गुटली चेकिंग करो, इंडियन ग्रीन मैंगो ट्री, ये आम का गुटली इतना लोग कहांकी का सामने बड़ा हो जाएगा। ये देखो थोड़ा बाजी का, ये थोड़ा बाजी का इस तरफ, मेरा पास देखो इधर कुछ माल नहीं, नहीं मट्टी है ना, थोड़ा मट्टी, जमीन का मट्टी है, मट्टी नहीं सो ये आम का गुटली पेड़ नहीं हो जाएगा। पानी डाला हूं, टोकरा रखे मुझे इसके अंदर, इसके अंदर तो आम का पेड़ नहीं, कुछ माल नहीं है, जो मैं इसके अंदर मैं इसको बंद करता हूँ, मुछता हूँ, तो मैजिक को थोड़ा ये है, मेरा इधर कुछ माल नहीं है, मेरा पास दूसरा कुछ माल नहीं है, इधर बाजू मट्टी है ना, तो पानी भी है, दूसरा कुछ माल सब देखने के लिए। इसके अंदर देखो, मैं इसके अंदर आम का गुटली रखा है, तमिल मांगा कुट्टे, मलयालतिले मांगा अंडी, मांगा अंडी मलयालतिले, इसको हिंदी में आम का गुटली है, आम का पेड़ हो जाएगा। ये देखो ओरिजिनलिटी है, नकली नहीं है। देखो माँ, आप इसको बड़ा करके आम तोड़ के देता हूँ मैं, कट कर तो नहीं पिकेगा ना। जय भगवान, आज ही इधर जल्दी से आप बुलाता हूँ। इसके अंदर हम रखता हूँ आम का बीज, इसके अंदर रख के थोड़ा मट्टी, थोड़ा मट्टी डाल के इसको बड़ा पेड़ आ जाएगा। इसको पानी भी चाहिए, पानी भी डाल दिया हूँ, थोड़ा भी मट्टी डाला, ये कैसा पेड़ हो जाएगा। देखो ये आ जाओ जल्दी से, अरे शैतान के बच्चे जल्दी हमारा पास इधर पेड़ लगाओ जल्दी से। आम का बीज कैसा पेड़ आ जाएगा, मट्टी मन ननेटिल्ला कुछ लो इसके जल्दी जल्दी होगी। आ गया पेड़, आ गया आपका सामने बार, अंकी का सामने पेड़ आ गया ना। आ जाओ जल्दी से, जल्दी आ जाओ। थोड़ा हाथ मेरा पास माइक सेट ले लो, अदुकोंड कई अडिकणम कुछ ऐसा थाली बजाओ, वो मेरा मंदिर है। आ जाओ, अभी पेड़ आ गया ना। पेड़ कैसा आ गया देखो, अभी हम बताता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। ए मेरा शैतान का बच्चा किधर चला गया? आ जाओ इधर जल्दी से, बताओ इधर जल्दी आओ, जल्दी से। छोड़ा बीज है ना, पेड़ बनाओ।
पेड़ हो गया। छोटा पेड़, ये प्लास्टिक नहीं है, इसको निकल के दिखाता हूं मैं। आम का बीज इसका अंदर रखा है, 5 लाजे के अंदर, ज्यादा नहीं है टाइम। आम का बीज, पेड़, सर देखो, हाथ में देखो, असली है, ये नकली नहीं है। देखो अम्मा जी, वो तोड़ के बास मारते देखो, हैं? इसके अंदर दूसरा बीज नहीं है। आपको ठकाने के लिए मैं बीज दूसरा नहीं इसके अंदर, बाप रे, बाप रे, दूसरा बीज नहीं है इधर। आ जाओ, अभी इसके अंदर क्या काम करते देखो, जल्दी से आ जाएगी। अभी थोड़ा टाइम है उसके लिए, काम। इधर आ जाओ। ये टोकरा रख दिया, इसमें पत्ता कितना है देखो, लीफ देखो कितनी, देखो 6 है ना, 6 है। हमारा मुल्क में केरला में बारिश पड़ने के टाइम पर आम का गुटली बड़ा हो गया तो ये सच रहेगा। वो ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലേ? ഇതാ ഇതിലെ വേറെ ഒന്നുമില്ല, കാലി തുണി എൻ്റെ അമ്മായിമ്മ തന്നതാ. മലയാളം അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയും. അമ്മായിമ്മ തന്ന ഈ തുണി മരുമകനെ വെച്ചോന്ന്. मेरा सास मुझे दे दिया ये कपड़ा। इसके अंदर देखो अभी कुछ माल नहीं है, अभी इसके अंदर खाली टुकड़ा, ये फूल का मटकी है, इधर रखता हूँ। देखो अभी क्या होने जाता है, ये देखो भगवान। ये देखो आम का पेड़ है, इसमें 6 पत्ता है, इसके अंदर लीफ 6 है ना। जादू कर दिया इसको। अभी आएगा, सब लोग थोड़ा हाथ थाली मारना चाहिए। आ जाओ, आ जाओ, हाँ जल्दी से। अरे बाप रे, पकड़, टोकरा बड़ा हो जाएगा। ये स्टेज में झाड़ बड़ा हो गया तो वो तकलीफ आ जाएगा। आ गया ना बड़ा, मट्टी डालना पड़ेगा, मट्टी रखना पेड़ को। मट्टी नहीं तो काम नहीं चलेगा। जमीन में मट्टी रहने के लिए पेड़ बड़ा हो जाएगा जल्दी से। छोटा पेड़ है ना, वो बड़ा होने के लिए अभी तुम्हारा थाली बजाओ, थाली बजाना बजाना वो बड़ा हो जाएगा। ये कपड़ा मैं ऊपर से उठा देता हूँ। पकड़, टोकरा पकड़, अंदर से कोटा पुड़ी की जाओ। कपड़ा उठा दिया मैं, इधर डाल दिया, थोड़ा हाथ धोने के लिए। अब वो बड़ा पेड़ होगा, कपड़ा उठाने, ये टोकरा उठाने 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 बहुत बड़ा हो जाएगा ऊपर। आ जाओ जल्दी से, जय गुरु। आज थाली मारो जल्दी से, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से। आ गया, बस। अभी बड़ा हो गया तो ये स्टेज है, बड़ा गलती हो जाएगा। खड़ो उधर। सो इंडियन ग्रीन मैंगो ट्री सर, മാങ്ങയുണ്ട് തരാം, മാങ്ങയുണ്ട്, ഇല വിരിയുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ, പൂ ഇല വിരിയുന്നുണ്ട്, നോക്കൂ. ഓക്കെ, മാങ്ങ, आम। सो सर ये देखो आम का फूल खिलता है इधर, ये देखो इधर आम का फूल आ गया, फिर आम का पत्ता आते बाहर खिल के आते। असली ये तो नकली नहीं है। देखो देखो सर, अभी इसका आम तोड़ने जाते हैं। सर यार बोले क्या मांगा बुटिया, किसी को बुलाना आम तोड़ने के लिए? किस सर मैडम डरना तो आम तोड़ने के लिए उसको ओरिजिनलिटी है, शकली नकली है देखने के लिए। तोड़ो, ये इसका दूध आते क्या देखो, पानी ये काढ़ो,
ये कान तोड़ो तोड़ो, ये तोड़ो। ओके ओके ओके, ऐसा पकड़ो, दबाओ, आते आओ, खाओ। एक 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 गंगाधर, ओ दूध आ गया इसके अंदर से, देखो ये देखो सर, अकली असली है सर। चे हाँ मैं भी देता हूं अभी। इंडियन देखो, ये दुनिया में 2 पान लेके हाथ में पकड़ा तो वो पान दुनिया पूरा मालूम पड़ेगा। ये पेड़ मैं कहां रखेगा? जय गुरु। बाप रे सर, ये तो स्टेज का मैजिक नहीं है, असली मैजिक है। इस स्टेज में इंसान को ठकाने का मैजिक नहीं है। ये एक सपड़ गया तो बस नल्ली में पकड़ो, देखो माँ पानी में डाला है, असली है ना, नकली नहीं है। बशीर बशीर सत्य कन्नाडी अभी इसको अभी बताएगा। ये भी एक जादू है, बड़ा बड़ा काम चलते हैं दुनिया में। अभी इसको क्या करते देखो, ये इंडियन मैजिक में अभी एक मैजिक। भगवान थोड़ा थाली बजाओ, हट तेरी के मैजिक। ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा मेरे को खूनी करना होगा क्या? नहीं होगा, अंदर चले जाएगा। सर असली खून है, ये नकली नहीं है, रंग नहीं है, सिनेमा में बताने का रंग नहीं है, असली है। ये चाकू असली है, नहीं नकली नहीं है, चेकिंग करो सर, चेक करो, देखो असली है ना। अभी देखो ये है ना, एक मिनट ये देखो चले गया वो। ये रंग रहा तो 2 सेकंड हाथ में खड़ गया तो वो जाय में लाल पकड़ेगा।
मैं 2 टुकड़ा करेगा, डर जाते लोग। पहले से भी पब्लिक में खेलने के टाइम पर 2 टुकड़ा करके सिर अलग रहेगा तो इंसान चक्री खाकर नीचे गिर जाते हैं। इसके लिए मैं ये वो काम नहीं करा दिया, मैं पब्लिक में नहीं चला। ऐसा फंक्शन मिला तो कौन नहीं कर देगा उतना अच्छा। अभी 2 टुकड़ा करना तो करेगा, नहीं करता है, नहीं करना तो देखने के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगा। अभी इसको बात करने रखता हूं मैं। अभी वो मेरा पास बात करेगा। आप भी मैजिक सीखने के लिए तकलीफ नहीं है, घर में जाओ, जैसे चाकू उठाओ, 2 चुबाना चुबाओ, आप ही मैजिक सीखेगा। किधर तो आम का पेड़ रहेगा ना, उसमें से 2 पत्ता निकालो, उसके ऊपर रख दियो, वो बात करेगा। बात करेगा क्या भाई? अरे പറയാ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഹിന്ദിയിൽ റെഡിയാക്കിക്കോളാം। ഇവിടെ വാ, നിന്റെ hypnotism, इसको मैं एक चाकू मारा ना, फोन आ गया, ये बात करा। अभी ये hypnotism देखो, बड़वा निन्ने एनपी कटे आप उठना छोड़ता हूं मैं, उठना छोड़ने के लिए थोड़ा जादू है, hypnotism mental method। प्रश्न बड़वा इदेंता साधनम സമയം നോക്കുന്ന വാച്ച് ടൈം യാ वो बोला घड़ी है बोला जल्दी എത്ര മണി കഴിഞ്ഞു പോയി? 5 മണി ആകാറായാ? അല്ല എത്ര സമയം? 5 മണി ആകാൻ എത്ര 5 മണി ആയിട്ടില്ലല്ലോ, 4 മണിയല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? 4 കഴിഞ്ഞോ? 5 കഴിഞ്ഞോ? 5 കഴിഞ്ഞോ? അവൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, 5 മണി കഴിഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ 5 മണി കഴിഞ്ഞ എത്ര ഇത്? നമ്മൾ ജൽദി എത്ര മിനിറ്റ് അധികമായിട്ടുണ്ട്? 45 മിനിറ്റ്. എത്ര മിനിറ്റ് കുറവുണ്ട്? ഇവിടെ വാ, തനിക്ക് എന്താ അടയാളം? കണ്ണാട. ആ ശരി. മലത്തി വേറെന്താ അടയാളം ഉണ്ട്? മലത്തി എന്തുണ്ട് അടയാളം? പൊട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വിയാ ഇതെന്ത് സാധനമാണ്? പെൻ. ഇവിടെ വാ, ചോദിച്ചാൽ പറയാം. ഓക്കെ. ഈ പെന്നിന്റെ കിമിച്ച് ടോപ്പിന്റെ കളർ എന്താണ്? ബ്ലാക്ക്. പക്ഷേ ഇതെന്താ സാധനം? സമയം നോക്കുന്ന വാച്ച്. സമയം നോക്കുന്ന വാച്ച്. ജൽദി എത്ര മണി കഴിഞ്ഞു പോയി? 5 മണി കഴിഞ്ഞു പോയി. നമ്പർ പറയോ? ഇപ്പൊ എത്ര മിനിറ്റ് അധികമായിട്ടുണ്ട്? 43 മിനിറ്റ്. കറക്റ്റ്, 43. ഇവിടെ വാ, ഇനി ചോദിച്ചാൽ പറയോ? ബോൺഗാവിർക്ക് എന്ത് അടയാളമുണ്ട്? മോതിരം അടയാളമുണ്ട്, റിംഗ്. ഇന്ന ഗോൾഡ് എത്ര പവർ ഉണ്ടത്? ഗോൾഡ് അല്ല, ഗോൾഡ് അല്ല, സോറി സാർ. ഇവിടെ വാ, ഇവർക്ക് എന്താ അടയാളം ഉണ്ട്? ശരിയാ. ഈ മോതിരത്തിൽ എത്ര കല്ലുണ്ട്? 9 കല്ല്. 9 കല്ല്. ഓ, നവരത്നം. ഓക്കെ. इधर मैजिक, इधर मोरिसम हिंदी में बोलता नहीं, उसको तमिल में बोलता नहीं। इधर तो पहले है रहा हिंदुस्तान में उल्लू बनता रहा इंसान। अभी छोटे छोटे बच्चे लोग बात याद मानो उसको, वो सब तकमुक नहीं चलेगा। अभी देखो कोई तो इधर मैजिक के लिए एक मैजिक बताता हूँ, लास्ट फाइनल मैजिक 25 कोई तो दे, मैं पलट के देने के लिए देता हूँ, नहीं आपका दिल का सरका करता हूँ। ये तुम्हारा दिल जल्दी बोर्ड के എത്ര തന്നത്? 500 രൂപ. 5. ഇപ്പൊ നോട്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 3, നമ്പർ അടുത്ത് 4, കുട്ടി അതിന്റെ അടുത്ത് 8, സിഗർ അതിന്റെ അടുത്ത് 6, കുട്ടി അതിന്റെ അടുത്ത് 8, ശരി അതിന്റെ അടുത്ത് 9, ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ 3. देखो ये काट दियो. एवल तान रुपया तन्नु 20 रुपया. कुटी फर्स्ट नंबर नंबर അതിന്റെ അടുത്ത് നമ്പർ അതിന്റെ അടുത്ത് കുട്ടി അതിന്റെ അടുത്ത് ശരി അതിന്റെ അടുത്ത് 9 6 ഓ തിരിച്ചു പിടിച്ചാ 6 करेक्ट. मेरा पास मिस्टेक आ गया, मैं ऐसा पकड़ेगा उसके लिए. बराबर. चांद की अम्मे के अंदर अड़यालम
കണ്ണാട അടയാളം ഉണ്ട്. അച്ഛാ, ഇവിടെ വാ. ഇവർ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാ ഇതെന്താ സാധനമാണ്? പഠിക്കുന്ന വസ്തു. പേര് Okay? So, अभी मैं मैजिक में बात में कोई मिस्टेक आ गया तो आप माफी करो. ये काम मैं मेरी जिंदगी में मैं सब मुल्क घुमा है, लिखने पढ़ने नहीं आते मुझे. मैं शराबी नहीं पीता, बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, गांजा गिंजा वो सब नहीं. कितना बोलेगा? 62 वयस. मैं सन, लड़की है बड़ा, उससे छोटा है, इससे छोटा है, उससे छोटा अबू धाबी में है, वो लुलु में मैनेजर है. मैं मेरे जिंदगी में ऐसा ही छोड़ के जाने नहीं होता. मेरा बेटा बोलता है सब छोड़ दियो क्या भाई? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा बाप दादा है. ये मैजिक इतना बड़ा पेड़ है, इसके अंदर कुछ भी रखने नहीं. बनीन डाला देखो, ये असली पेड़ है, डुप्लीकेट नहीं है. जापान मामी मदा लड़की, एक लड़की है, ये लिखने वाली है, वो मुदुगाड़ गोपीनाथ म्यूजिशियन, उनका पास पहुंचा, 2 करोड़ रुपया देगा. ये कहाँ रखा वो बोलो, बोलो मेरा पास ये किधर रखा, इसके अंदर कहाँ रखा वो बोलो. टुकड़ा में नहीं है, ये पब्लिक बाजू इतना पब्लिक है, किधर से आया वो बोलो. 2 करोड़ देगा. मैं बोला मैं हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन से, वो सभी इंसान बना दिया सो. जो इधर इंडिया हमारा भारत देश है, ये देश में से थोड़ा मट्टी आपको जापान को दिया तो मेरा माता पिता को आपको दिया सर करेगा. മനസ്സിലായോ? എൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മനെ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ന് പുറത്തു കൊടുത്ത പോലെ ആകും. ഇന്ത്യ ഭാരതം बड़ा है, हिंदुस्तान हमारा देश, हिंदुस्तान की देश. हिंदू मुसलमान, मेरा नाम शमशुद्दीन, ये नाम हिंदू में है. जमजुन अरबी डायलॉग, जमजुन सूरज, शमशुद्दीन तो प्रकाशम, उसके लिए सूर्य प्रकाश. कमरुद्दीन, कमरु चंद्र, चंद्रन, दीन प्रकाशम, कमरुद्दीन चंद्र प्रकाश. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി ദൈവം തമിഴ് മലയാളം में बोलते ദൈവത്തിന്റെ दासन, दासा. मैं मर गया तो उसको हिंदी में बोलते मुर्दा, तमिल में पुणम, इंग्लिश में डेड बॉडी, मलयालम में शवम, अरबी में मैयत. इतना है दुनिया में, कुछ नहीं. इंसान मर गया तो हाथ में घड़ी बनाना वो भी नहीं मिलेगा, मिट्टी के अंदर चले जाएगा. उतना इंसानों को जीना है, शैतानों को नहीं जीना है. उसके लिए मैं बोला से मिस्टेक रहा तो मेरा माफी कर दियो. नमस्कार. മെല്ലെ 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 മെല്ലെ. ഓക്കെ, പതുക്കെ പതുക്കെ. ഓ ഊരി, കത്തിയൊക്കെ ഊരി മാറ്റി. ഓക്കെ. Indian mango tree magic. असली, नकली नहीं है. शुगर कंप्लेंट नहीं आएगा. Ladies and gentlemen, I have seen a lot of Indian street magic, but that was perhaps the best performance I've ever seen. Where is the trickery in that? We were all standing so close, and it was just pure magic through and through. Shamshuddin, Mustafa, thank you very much. That was an extraordinary performance. What more is there to say? I think that the magic did all the talking, and I'm losing my voice. But
People ask me why I wrote a book, spent 3 years writing a book on Indian magic. I think you have the answer there. It's seeing people like Shamshuddin, performers of the, for whom magic is an art form. It's extraordinary. It's not just entertainment, it's an art. It's amazing, and I only wish them well. It is getting tougher and tougher for Indian street magicians to perform, and thank you to the Hindu and thank you to Huddle for making this possible, for at least giving me the opportunity to talk about India's magical heritage and giving Shamshuddin and Mustafa the opportunity to show you what that heritage really is all about. Thank you very much. Thank you, Mr. John Zubrzycki and Shamshuddin. May I please request Mr. Mukund Padmanabhan, editor of The Hindu, to present a memento to Mr. Zubrzycki and to Shamshuddin and to deliver the vote of thanks. Phew. Okay, 2 days, and I hope we've woven some magic, not just now, but over the 2 days. I just like just a round of applause for the people who worked on the Huddle for a long time. It's a long team, editorial colleagues of mine. Thank you very much for doing this. And thank you very much for coming to this, and see you next year, yeah? All right, bye-bye.